अस्सलाम वालेकुम क्लास। इट्स आवर 16th लेक्चर और हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में इक्वेशन ऑफ प्लेन्स और इक्वेशन ऑफ लाइंस ये सब कुछ फाइंड आउट किया था और किस तरह हम फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमारे पास पॉइंट्स गिवन हो तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन्स कैसे निकाल सकते हैं। ये इसी डिटेल को आगे प्रोसीड करते हुए आज जो हम फाइंड आउट करेंगे और इस लेक्चर में जो पढ़ेंगे वो है डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू द प्लेन, जो कि हमने थोड़ा बहुत इसको टच किया है इन प्रीवियस लास्ट लेक्चर में 15 लेक्चर में कि हमारे पास डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू द प्लेन उसका क्या फॉर्मूला होता है। आज हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे इस लेक्चर के अंदर। Now find a formula for the distance d from a point P to the plane ax plus by plus cz plus d equals to 0. As you all already know in the previous chapter that ax plus by plus cz plus d equals to 0 represents the equation of a plane. And if we have a point not on the plane, on that plane whose equation is given p1 x1 y1 z1, how its distance formula can be find out. Let p0 x0 y0 z0 be any point in the plane. Let p be the vector corresponding to p0 p1. अब p0 जो है हमारे पास कोई भी पॉइंट है प्लेन के अंदर, और अभी मैंने आपको बताया कि P1 जो पॉइंट है वो हमारा प्लेन उस प्लेन के अंदर नहीं है। So the line segment is represented, the line segment P0 P1 is represented by the vector B. So the distance of B vector, or you can say that the B vector can be defined by, अब P0 और P1 है आपके पास तो जाहिर है P1 में से P0 के पॉइंट्स माइनस कर देंगे तो हमारे पास B वेक्टर आ जाएगा। एंड व्हाट विल बी द B वेक्टर? x1 माइनस x0 y1 माइनस y0, और इसी तरह उसके जो z कोऑर्डिनेट्स हैं उनको जब माइनस करेंगे P1 और P0 के, क्योंकि इट इज़ अ डिस्टेंस फ्रॉम P0 टू P1, तो z1 माइनस z0 आ जाएगा, राइट। As you can see in the figure, the P1 is the point which is not on the plane, and whereas P0 is the point which is on the plane. So, and the distance, or the line segment which is represented from P0 to P1 represents a vector B, right? ये सब चीज़ें जो आप ऑलरेडी अब आपको पता चल चुकी हैं, और बी वेक्टर को किससे एक्सप्रेस किया था वो हमने लास्ट स्लाइड में देख लिया। नाउ यू कैन सी दैट द डिस्टेंस डी फ्रॉम द पॉइंट, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द प्लेन, राइट। तो हमारे पास पॉइंट यहाँ पे कौन सा है? P1 टू द प्लेन इज इक्वल टू द एब्सोल्यूट वैल्यू of the scalar projection of P onto the normal vector n, और normal vector n को हम जो इक्वेशन ऑफ प्लेन हमने अपने लास्ट लेक्चर में नॉर्मल वेक्टर निकालना भी आपको बताया था, जिसके अंदर हम कैसे निकाल सकते हैं, जो आपके पास गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन है उसके अंदर जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं, जो कोफिशिएंट्स होते हैं ए बी सी, the direction, these coefficients are called the direction vectors, और वो जो डायरेक्शन वेक्टर्स हैं वो एक्चुअली नॉर्मल वेक्टर बनाते हैं, राइट। अब अगर आप फिगर में चेक करें तो हमारे पास जो डिस्टेंस आ रहा है वो आप चेक करें P1, वो एक्चुअली क्या है, वो आपके पास क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ B onto the normal vector n, ऐसा ही हो रहा है, राइट।
plus d is equals to the absolute value of the scalar projection of B onto the normal vector. So it can be written as the mod of n dot P over its magnitude. And while taking n dot P, we are left with a x1 minus x naught plus b, y1 minus y naught plus c, z1 minus z naught modulus. n वेक्टर हमारे पास क्या था? A, B और C. Whereas B वेक्टर जो था हमारे पास वो x1 माइनस x नॉट था, y1 माइनस y नॉट उसके कंपोनेंट्स थे, z1 माइनस z नॉट. और जब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे या स्केलर प्रोडक्ट लेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी. इसी तरह अब जब हम नॉर्मल वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे जबकि इसके कंपोनेंट्स हमारे पास क्या थे? ए बी सी. तो इसका मैग्नीट्यूड बन जाएगा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. नाउ अब यहाँ पर जो हमारे पास फोर्थ स्टेप है उसके अंदर सारे जो पॉइंट वन के कोऑर्डिनेट्स हैं उनको इकट्ठा कर लिया और सब्ट्रैक्शन वाली वैल्यूज को इकट्ठा कर लिया बाय टेकिंग माइनस एज ए कॉमन. सो इट गिव्स मॉडुलस ax1 plus by1 plus cz1 minus by taking minus as common bracket ax naught plus by naught plus cz naught divided by square root a square plus b square plus c square. As we know that the point P naught lies in the plane, so this point must satisfy the equation of the plane. Therefore, and what is the equation of the plane is ax plus by plus cz plus d equals to 0, which is the general form of the plane. If the point P lies in the plane, so it must satisfy that equation. So putting the value of that point in the equation of the plane, we are left with ax naught plus by naught plus cz naught plus d equals to 0. This vector becomes 0. Now putting this vector in the distance formula, we are left with hence after substituting the value of ax naught plus by naught plus cz naught plus d equals to 0 in the distance formula, we are left with the first term in the numerator, which is ax1 plus by1 plus cz1 plus d mod. So the the formula for the distance of a point from the plane or of a point to the plane can be written as d equals to mod of ax1 plus by1 plus cz1 plus d mod divided by square root of a square plus b square plus c square. This is a link in order to understand the distance from a point to the plane, जिसके अंदर डिफरेंट एग्जाम्पल भी दी हुई है और आप इजीली इसको जब गो थ्रू करेंगे तो आपको होपफुली ज़्यादा समझ आएगा.